हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये PHY101 फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs किए जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला MCQ है, अ पॉइंट ऑफ पार्टिकल विद चार्ज Q is at center of a Gaussian surface in the form of a cube. The electric flux through any one face of the cube कितना होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी Q/60 होगा। अब a round waste paper basket with a 0.15 meter radius opening is in a uniform electric field कितना है वो 300 N/C। तो perpendicular to the opening, the total flux through the sides and bottom in M2C कितना होगा? वो होगा आपका 21। सही आंसर आपका होगा। अब 10C of charge are placed on a spherical conduction shell. A particles with a charge of -3C is placed at the center of the cavity. The net charge on the inner of the shell कितना होगा? प्लस, क्योंकि वो माइनस हो रहा है तो जो उसके जो यानी कि मतलब अदर साइड जो चार्ज बनेगा वो आपका बनेगा +3C। अब चार्ज Q is distribute uniform through an insulation sphere of radius r. The magnitude of the electrical field at the point of r/2 from the center, तो वो कितनी होगी? वो होगी ऑप्शन नंबर डी। तो वो बनेगा Q/r पाई OR2। अब positive charge Q is distributed uniformly through n insulation spheres of radius r. The centric at the origin, particles with a positive charge Q is placed at x2r on the x-axis and the magnitude of electrical field at xr/2 on the axis। तो उसका सही आंसर आपका कितना है? Q/7T2 पाई OR2। अब charge Q is distributed uniformly through a spherical insulation shell. The net electrical flux in N M2/C through the inner surface is 0। तो इसका सही आंसर आपका 0 है। अब charge is distributed uniformly along a long straight wire. The electrical field of 2 cm where the wire is 220 Nc. The electrical field 4 cm from the wire कितनी होगी? 10 Nc, क्योंकि अब 2 मीटर का वायर था तो 20 थी, तो 4 मीटर का वायर बढ़ा दिया तो कम कर दें तो 10 हो जाएगा आपका सही आंसर। A long line of charge with lambda charge per unit length run along with cylindrical axis of a cylindrical shell which carry a charge per unit length of lambda. The charge per unit length on the inner and outer surface of the shell is respectively कितना होगा? तो सवाल आपका आंसर बी होगा, -λ and λc plus λ। Charge is distributed uniformly on the surface of a large flat plate. The electrical field 2 cm from the plate in 13 Nc. The electrical field 4 cm from the कितनी होगी? वो होगी आपकी 30 N/C।
A particle with a charge q is placed outside a large neutral conduction sheet at any point in the interior of the sheet. The electrical field produced by charges on the surface is direct किसकी तरफ होगी, वो होगी टूवर्ड्स क्यू की तरफ जाएगी, यानी जो चार्ज क्रिएट हो रहा है वो टू की तरफ टूवर्ड्स क्यू की तरफ जाएगी. अब होलो कंडक्टर is positively charged. A small uncharged metal ball is lowered by a silk thread through a small opening in the top of the conductor and allow to touch in its inner surface. After the ball is removed, it will have a positive charge. तो इसका सही आंसर नो एप्लीकेबल चार्ज सही आंसर है इसका. अब a spherical conduction shell has q particle with charge q is placed at the center of the cavity. The charge on the inner surface of the shell and charge of the outer surface of the shell respectively a zero q. तो आपका क्या आंसर बनेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू कैपिटल प्लस स्मॉल क्यू. अब आप particles with a charge of 5.5 multiplied by 100 minus 8c in this 3.5 for a particular with a charge of 3.2 multiplied by 10 minus 5c. The potential energy of these two particular system are relative to the potential energy at infinite separation. तो कितनी होगी, वो होगी -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 -4 जूल्स की एनर्जी होगी. और इसी तरीके से पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ 5.5 10 minus 8c is fixed at the origin. A particular with a charge of -2.3 multiplied by 10 minus 8c. It is both for x 3.5 centimeter on the axis of y 4.3 meter on the y-axis. The change in particular potential energy of the two particles कितनी होगी, वो होगी 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 5 जूल्स की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी. अब आइडेंटिकल पार्टिकल विद ईच charge q with a place on the axis of one at the origin and other is 5 centimeter. A third particle with a charge minus q is placed on the axis, so the potential energy of the third particle in the system as potential energy at infinite space is coordinate is कितना होगा, a 13 सेंटीमीटर के बराबर वो बनेगी. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो आप प्रोटॉन ट्रेंड टू बी फॉर अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ अ हाई पोटेंशियल. Potential of a negative charge conduct must be negative. If E is equal to 0 at a point P, then V must be 0 at point B. तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो none of the above स्टेटमेंट आर करेक्ट. सही आंसर है आपका. If 500 joules of work are required to carry the charge to a particles between 2 points with a potential difference of
20 वोल्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कितना होगा, वो होगा आपका 12.5 C। अब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ 100 वोल्ट इफ अ particles with a charge of 2C is transport from one of these point of to the other, the magnitude of the work is done by 20 joule. An electron is accelerated when rest through a potential difference V. Its final speed is potentially कितनी होगी, अंडर रूट V के बराबर होगी। एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कितनी है, वो है द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। अब ए हॉलो मेटल स्फीयर इज चेंज टू अ पोटेंशियल V, द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर कितना होगा, वो होगा V। A metal sphere carry a charge of 5 multiplied by 10 minus 9C and is at a potential of 400 volt relative to a potential far away. The potential at the center of the sphere कितना होगा, वो होगा आपका 40 वोल्ट या 400 वोल्ट। अब a 50 centimeter radius isolate conduction sphere is charged so that its potential is 100 V, 100 voltage हो रहे, relative to the potential far away the charge density on its surface, तो वो कितना है, वो है आपका प्लस 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 minus 8 C m2। अब a conduction sphere has charge Q and its electrical potential is V relative to the potential far away. If the charge is double to Q, तो कितना होगा, वो 2 वोल्टेज, यानी कि मतलब डबल करेंगे तो 2 वोल्टेज बढ़ा देंगे जाएगी। A potential difference between the end of a 2 meter strike that is parallel to a uniform electrical field of 400 volt, the magnitude of the electricity field कितना होगा, वो होगा 800 volt/m के बराबर होगा। In a certain region of space, the electrical potential increase uniformly from east to west, does not vary in any other direction. The electrical field क्यों करती है, जो point of east and does not vary with the position, यानी मतलब point of east में होती है लेकिन position vary नहीं करती। Equipotential surface associated with a charged point particles are concentric spheres centered at the particles. Room temperature is about 20 degree on the select the correct option. तो सेल्सियस स्केल के बराबर ये हम देख रहे हैं ना, केल्विन ना फ़ारेनहाइट वगैरह। The quantum number of ms is most closely associated with the property of the electron in an atom. तो component of the spinning angular momentum इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। J.J. Thomson measures the measurement of E/m for electron provide evidence of the particular nature of matter. During a slow adiabatic expansion of a gas,
तो क्या है, नो एनर्जी इंटर और लीव एज हीट। अब पार्टिकल विद चार्ज कितना है, 5 पॉइंट minus mu c is placed at the corner of a cube. The total electric flux in and m2/c through all the sides of the cube. तो कितनी होगी, वो सही आंसर है आपका E 1.6 मल्टीप्लाई बाय 105। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।